हाय, आई एम डॉक्टर देबाशीष, योर बायोलॉजी मेंटर। इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे जो एमआरएनए प्रोसेसिंग का जो सेकेंड इवेंट था, क्लीवेज एंड द पॉलीएडेनाइलेशन, उसके बारे में ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। पहले हमने देख लिया था क्या ना, जो आरएनए का जो प्रोसेसिंग होता है उसमें पहला जो स्टेप होता है वो होता है 5 प्राइम कैपिंग। उसके बाद जो स्टेप होता है वो होता है क्या ना, 3 प्राइम cleavage and the polyadenylations, right? So when you are discussing about the mRNA, particularly the mRNA in the eukaryotes, so definitely we'll find this type of the structure. Suppose this is the 5 prime. At the 3 prime end, we can get a stretch of the adenine up to 200 to 250 adenine we can find. एक स्ट्रेच हमें मिलेगा। ये जो स्ट्रेच हमें मिलता है, इस स्ट्रेच को हम क्या बोल सकते हैं ना, दिस इज नोन एज द पॉली ए टेल। दिस स्ट्रेच इज नोन एज द पॉली ए टेल, एंड इंटरेस्टिंगली द स्ट्रेच ऑफ दिस एडेनाइन और पॉली ए टेल, इट इज नॉट ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द डीएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए से नहीं आता है। ओके, सो दिस इज प्रिपेयर्ड और सिंथेसाइज्ड बाय द अनदर स्पेसिफिक एंजाइम दैट इज नोन एज द पॉली ए पॉलीमरेज, राइट? सो ये जो सिंथेसिस होता है पॉली ए पॉलीमरेज, पहले क्या होता है ना, सपोज मान लीजिए ये आपका इमैच्योर एमआरएनए है और प्राइमरी एमआरएनए है और जस्ट न्यूली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए मॉलिक्यूल है। यहाँ पे जो 3 प्राइम एंड आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ही लेंथ में, राइट, अपस्ट्रीम फ्रॉम द 3 प्राइम एंड, यहाँ पे क्या होगा ना, क्लीवेज हो जाएगा। मतलब ऐसे एक स्ट्रैंड फॉर्मेशन होगा। उसके बाद क्या होगा ना, एडेनाइन जो न्यूक्लियोटाइड आप देख रहे हैं वो क्या करेगा ना, ऐड होगा। मतलब पहले क्लीवेज होगा 3 प्राइम एंड से, उसके बाद क्या होगा ना, आपका एडेनाइन ऐड होगा। ये जो मैकेनिज्म आप देख रहे हैं, इस पिक्चर के थ्रू से हम यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। सी, दिस इज द न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स, एमआरएनए मॉलिक्यूल्स, राइट? यहाँ पे आपको 3 इंपॉर्टेंट सीक्वेंस मिलेगा। ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं, दिस इज नोन एज द सिग्नल सीक्वेंस, and this is the signal sequence for the polyadenylations. This sequence is important. If you mutated this sequence, then it will affect the polyadenylations event. Second one is the cleavage. This is the cleavage sequence. This particular is the actual cleavage site. This is the actual cleavage site, right? And this is a G. You will find a stretch of the GU reach sequence, and this is the poly A site, right? So यहाँ पे 3 sequence we can find. One is the signal sequence, which is essential for polyadenylation. This is the CA, this is the actual site for the cleavage at the 3 prime end, and this G reach sequence is important for your poly A site. Then we have 2 important protein or enzyme, you can say. One is the CPSF, one other is the CSTF, cleavage and the polyadenylation stimulating factor and the cleavage stimulating factor. So first it will recognize, this is recognize the signal sequence. And second, this will bind to the GU rich sequence, and they will facilitate the binding of the endonuclease enzyme that is known as the cleavage factor 1 and cleavage factor 2, right? That is known as the cleavage factor 1 and the cleavage factor 2, and these are the endonuclease enzyme, and they will cleave at this particular CA site. I have already mentioned you, this is the cleavage site, actual cleavage site. So they will cleave at this particular site. Now you will find a trimmed 3 prime, okay, which is site for the polyadenylations, right? Now the important enzyme come to the picture. This is not the PAP. PAP stands for the poly A polymerase. Poly A polymerase. And this poly A polymerase is an important enzyme for the addition of the extra nucleotide, adenine adenine nucleotide at the 3 prime end. And interestingly, it does not require any template, because you know the RNA is synthesized from the DNA. So DNA acts as a template. So RNA polymerase is a DNA dependent polymerase, right? But here is the DNA independent or the what template independent RNA polymerase, right? So it will synthesize the adenine nucleotide or add the adenine nucleotide at the 3 prime end. The function of the PAP is facilitated by another protein that is known as the PABP. यहाँ पे PABP एक प्रोटीन, दो पॉलीएडेनाइलेट बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या करेगा ना, बाइंड करेगा पीएपी के साथ। पहले क्या करेगा ना, पीएपी एक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस करेगा,
राइट, छोटा सा 8 to 10 एडेनिन ऐड करेगा, उसके बाद पीएबी के साथ मिलकर ये क्या करेगा ना 200 250 तक ये क्या करेगा ना ऐड होके जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या ना क्लीवेज एंड द polyadenylations आर द 3' एंड ऑफ द यूकैरियोटिक एमआरएनए, राइट। कभी कभी प्रोकैरियोटिक आरएनए भी हमें 30 to 40 टाइप, बहुत रेयर केस में 30 to 40 न्यूक्लियोटाइड का पॉलीएस्टर हम मिलता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली जो पॉलीएटेल है ये हमें कहाँ मिलेगा ना यूकैरियोटिक में मिलेगा। तो ये इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन जो जब हम फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो पहला आता है स्टेबिलिटी। फर्स्ट इज द स्टेबिलिटी। सेकंड क्या करता है ना, जो ये एमआरएनए सिंथेसिस होने के बाद क्या करेगा ना ट्रांसलेशन होगा। सो इन द यूकैरियोटिक सेल्स वी हैव द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो एमआरएनए विल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। सो this particular poly-A tail helps from the transportation of this RNA molecule, new RNA molecules from the nucleus to the cytoplasm for the initiation of the translation. So ये translation so transport के लिए भी मदद करता है, transport from the nucleus to cytoplasm. So it helps in the initiation of the translation, it helps in the initiation of the translation, it helps in the ribosome binding also, right. So ये खत्म हो गया हमारा 3' क्लीवेज एंड द polyadenylation। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे इंट्रोन रिमूवल होता है आरएनए स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म के थ्रू। थैंक यू।